ऐसे ही हम थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेते हैं बेटा जल्दी जल्दी. See the first problem. The period of a simple pendulum whose bob is an hollow metallic sphere is capital T. The period is your T1 when the bob is filled with the sand, and T2 when it is been filled with your mercury. Okay. The period is given how much for me? T1 when it is in hollow metallic sphere बेटा. Hollow metallic के लिए कितना है? कैपिटल T है. Then if it is filled with the sand, इसका कितना है? T1 है. And it is filled with the mercury, it is T3. When it is in half filled with the mercury, which of the following is true is asking. इसके लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही रहेगा. इसके लिए भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही रहेगा. इसके लिए भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही रहेगा. लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा. तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो रहा है, isn't it? So when the length is been increasing, so what is happening right now? T3 is really ज़्यादा, so T will be equal to your T1. T1 will also will be equal to T2, but T2 will be lesser than of your T3. Clear beta? So fourth option will be the answer first. Clear? Sure. A pendulum clock that keeps the correct time on the earth is taken to the moon. It will run. So time period का फॉर्मूला क्या है बेटा? T is equals to 2 pi under root of your L by your G. यानी time period of your earth divided by time period on your moon will be equal to under root of G on your moon divided by G on your earth. देखो जल्दी से करके बताओ. ओके. G on moon कितना होता है बेटा? Under root of your G on moon is 1/6 of the G on your earth. ये वाला चले गया तो कितना बन जाएगा? 1/√6, isn't it? So it will become 1/√6 यानी √6 times slower. होता है ना बेटा? Because T on moon will be equal to √6 times of the T on the earth. ठीक है? Next one. A pendulum has a time period capital T in air when it is made to oscillate in water. It required a time period of T dash is equal to √2T. The density of the pendulum of the bob is equals to how much? मैंने बोला था when it is immersed in the water, G की वैल्यू कैसे लिखोगे बेटा? G dash will be equal to G into 1 minus of sigma divided by rho. Sigma is the density of your water. Sigma and rho are what बेटा? Density of your water and density of your bob. This is for water. This is for your bob. Okay. So the period of oscillation in the air will be equal to how much? Air के लिए अगर लिख रहा हूँ मैं, T is equals to 2 pi under root of your L by G, isn't it? Water के लिए कितना हो जाएगा? When it is immersed in the water, T dash is equals to 2 pi under root of your L by your G dash. तो दोनों को डिवाइड कर लो. T divided by your T dash is equals to कितना आ रहा है? Under root of your G dash divided by G. यानी that is equals to under root of G dash की वैल्यू कितनी आई बेटा? G into 1 minus of sigma divided by rho divided by G. G और G gets cancelled. That is equals to under root of 1 minus sigma divided by rho. So that is equals to under root of 1 minus 1 by your rho. तो T by T dash वैल्यू कितना दिया रखा है प्रॉब्लम में? T by T dash की वैल्यू कितना दे रखा है? √2 times of T. यानी T dash की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T divided by √2 times of T. AT और AT चले गया. ठीक है, तो रूट भी निकाल दो. तो 1/√2 और ये रूट चले जाएगा तो 1/2 is equals to 1 minus 1/ρ. ठीक है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लो. विल बी गेटिंग ρ is equals to 2. ठीक है. नेक्स्ट वन. An object of mass 0.2 kg executes a simple harmonic motion along x-axis with frequency of 25 by pi. At the position x is equals 0.04 meter, the object has a kinetic energy of 0.5 joules and potential energy 0.4 joules. Amplitude of the oscillation in meter is equals to how much? हल्लू पढ़ाओ बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, इसलिए चलो ठीक है. An object of mass कितना है मेरे पास? 0.2 kg है, which is executing a simple harmonic motion along x-axis with frequency कितना है? 25 by your pi. At a position x is equals 0.04 meter, the object has a kinetic energy of 0.5 joules and potential energy 0.4 joules. Amplitude पूछ रहा है.
तो एनर्जी का फॉर्मूला याद है आप लोग को, E इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू योर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में लिखूं तो कैसा होगा बेटा, हाफ इंटू एम, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू योर फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर इंटू योर ए स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें से एम्पलीट्यूड निकालो, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई इंटू योर एफ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है ना, और हमारे पास एनर्जी क्या है बेटा, टोटल एनर्जी इज योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। Object has kinetic energy 0.5, potential energy is 0. यानी kinetic energy will be equal to 0.5 plus 0.4, यानी ये बन गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ यूवर 1/2 पाई भी है ना बेटा, चलो 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 25 डिवाइडेड बाई पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी आती है बेटा 0.5 प्लस 0.4 दैट विल बी योर 0.9 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना दे रखा है प्रॉब्लम में 0.2 kg, उसको सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द एम्पलीट्यूड। देखो कितना आ रहा, ए पाई चले गया, ये हो गया 1/50, 0.9 मतलब क्या 2 9 से 18, isn't it? 0.9 0.9 चले जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2, 0.9 ही है ना बेटा, ठीक है। कितना आ रहा देखो 0.06 मीटर आएगा बी। चलो फिफ्थ वन, time period of a block suspended from the upper plate of a parallel plate capacitor by a spring of stiffness K is T when the block is uncharged, the charge Q is given to the block, then ये तो सेकंड ईयर आने के बाद आता है, इसको छोड़ दो। सिक्स्थ वन देख लो बेटा, a man weighing 60 kg stands on an horizontal platform on a spring balance. The platform starts executing the simple harmonic motion of amplitude 0.1 meter and frequency 2 by pi hertz. Which of the following statement is correct? Spring balance reads the weight of the man 60 kg. Spring balance read fluctuating between 60 and 70. Spring balance reading fluctuates between 50 and 60. It fluctuates between 50 and 70. देखो when he has been standing on this one, the forces acting on the body are right now for me what beta? Weight of the body m into g is in the downward direction. SHM जब कर रहा है basically, so what will be the condition? Maximum force of this body will be acting in the downward direction. So F is equals to your minus of your K into your X. So K is equals to minus of M omega square into your X. This is your force. ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग यानी वेट ही पूछ रहा है, so that is equals to your mass minus and indicates only direction, nothing to do with the calculation, omega 2 pi into your frequency का whole square into ये amplitude हो गया ये। तो मास कितना दे रखा है बेटा 60, so it is 60 into 2 into 22 by 7 into frequency, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 2 by pi ये पूरा हो गया होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दे रखा है 0.1। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। Anyone got it? ये पाई है, ये भी पाई है, पाई पाई चले जाएगा, दिस इज 60 into
कितना आ जाएगा 2 2 is 4 4 square is nothing but 16 into 0.1 यानी 1/10 तो ये चलेगा ये चलेगा ठीक है ना तो कितना बनेगा दिस इज 96 न्यूटन अप्रोक्स होता है ना So F is equals to mg, that is equals to 96 Newton. So mass will be equal to how much it will be reading? 96 divided by 9.8. That is approximately 10 kgf. Which is acting towards what position beta? Mean position. So weight of the body मतलब इस पे resistive force SHM लग रहा है ऊपर के direction में F max. तो नीचे के direction में लगेगा mg, isn't it? So when it is been in the compressed position, जब ये compress होगा spring gets compressed, the weight of the body is mg, normal will be acting in the upward direction. So reaction force on the platform will be what beta? ये कितना बन जाएगा फिर जब weight of the 10g will act in the downward direction, mg plus f max also will act in the downward direction क्योंकि mean position से now when body goes in the upward direction, mg acts in the downward direction and इसका force also will act in the downward direction. So it is mg plus f max. ओके सो मास कितना है 60 एफ मैक्स कितना है मेरे पास यहाँ पर 10 ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 70 मैक्सिमम 70 होना चाहिए और 60 माइनस 10 50 में 50 होना चाहिए देन मींस अप्रोक्सीमेटली इट विल बी डी 50 to 70 के बीच में रहेगा चलो seventh one, a man having a wristwatch and a pendulum clock rises on a TV's tower. The wristwatch and a pendulum clock per chance fall from the top of the tower. Then both will keep the correct time during the fall. Both will keep incorrect time during the fall. Wristwatch will keep the correct time and the block will become fast. And the clock will stop, but wristwatch will function normally. कोई बता सकता है इसका आंसर? देखो wrist watch के अंदर क्या होता है कि it works under the spring, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, बट पेंडुलम क्लॉक के ऊपर ग्रेविटी ऐड करेगा. So during the free fall, effective acceleration will become कितना 0. So the time period comes out to be infinity. यानी clock will directly stop. So clock will stop, but the wrist watch will work normally क्योंकि wrist watch के अंदर spring होता है. तो spring के ऊपर जब फ्री फॉल कर रहा है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन पेंडुलम के अंदर फ्री फॉल हो जाएगा. फ्री फॉल के लिए यही वैल्यू g हो जाएगा. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा infinity. So the clock will stop, but wrist watch will function normal. Next one. A force of 6.4 Newton stretches a vertical spring of 0.1 meter. The mass that must be suspended from the spring so that it will oscillate with a period of your pi by 4 seconds will be equal to your how much? तो मास पूछ रहा है. फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? F is equals to K into X. फोर्स कितना दे रखा है 6.4 न्यूटन, that is equals to K into एक्सटेंशन कितना है 0.1, यानी K की वैल्यू हो गई 64 न्यूटन पर मीटर. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T is equals to 2 pi under root of your m divided by K होता है बेटा. ठीक है ना. पाई की वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? pi by 4, that is equals to 2 pi under root of mass m divided by 64. a pi और a pi चले गया. So this will be equal to your 1 by 8. ये हो जाएगा 1 by 8 whole square is equals to 1 by 64. Mass by 64. 1 by 8 is a 64, that is equals to m is also 64. 64 will get cancelled. So mass will be equal to your 1 kg. 1 kg will be the mass. Next one. A spring with the 10 coils has a spring constant K. It is exactly cut into two halves. Then each of this new spring will have a spring constant of how much? Spring constant मैंने आप लोगों को बताया था K is inversely proportional to the length. यानी K into L will be equal to K into your L dash. So K into your L will be equal to K dash into L dash is nothing but half. PL AL चले गया तो K dash will become how much for me? 2 times of your K.
K dash will become how much for me beta? 2K. Done. Next one. Four massless spring whose force constants are 2K, 2K, K, and K. Okay. Are attached to a mass capital M in a frictionless plane. If capital M has been displaced in the horizontal direction, then the frequency of oscillation will be equal to how much? This two will be in parallel beta. This two will be in series. Okay. K and 2K. ठीक है ना बेटा? ये दो पैरेलल में है और ये दो सीरीज में है. सीरीज मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 2K डिवाइडेड बाई 2. सिमिलर जब रहा था 2 and 2, तो इसका इफेक्टिव बन जाएगा K और इसका बन जाएगा 3K. यानी फाइनल कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ बनेगा विद स्प्रिंग कांस्टेंट और ये हो जाएगा बीच में, ये हो जाएगा 3K और यहाँ पर हो गया K, यहाँ पर हो गया मास. दोनों के बीच में मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा. जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा मतलब टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट विल बिकम हाउ मच? और में K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू K प्लस 3K. तो ये हो गया मेरे पास 4K. तो टाइम पीरियड विल बिकम फॉर मी T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ योर M by 4K. Very good. Next one. Values of acceleration A of a particle moving in a simple harmonic motion as a function of its displacement x is given in the table below. Okay, first one दे रखा है acceleration mm में दे रखा है और x भी mm में दे रखा है. So period of the motion will be equal to how much? देखो अपने पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है, a is equals to omega square into x. मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ, isn't it? So omega square will become for me how much? A by your x. From the given values, if I take the values of the given condition, omega square की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? Acceleration first one 16 ले लो, 4. So this will become how much for me? 4 4s हो गया 4, यानी ओमेगा हो गया 2. यानी ओमेगा वैल्यू कितना होता है? 2 पाई बाई कैपिटल T is 2. 2 gets cancelled, so T is equals to 5 seconds. उसी तरह से 8 by 2 के लिख के देखो, उसी तरह से 0 by 0 कर लेते चले जाओ, get the answer. Two pendulums have a time period T and phi T by 4. They start SHM at the same time from the mean position. What will be the phase difference between them after the bigger pendulum has completed one oscillation? Two pendulums है बेटा, एक बिगर पेंडुलम है जो इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, इसका टाइम पीरियड कितना है? phi T by 4. अनदर वन है, this one has been smaller pendulum, time period T. Okay, so the two pendulums have a time period capital T and phi T by 4. They start SHM at the same time from mean position. What will be the phase difference between them after the bigger pendulum has completed one oscillation? देखो, by the time bigger one has been completed one oscillation, the smaller one might have been traveled 1/4 of oscillation. है कि नहीं? तो 5T by 4 must be equal to T plus of your T by 4. Okay, तो एक एक्सट्रीम पे रहेगा और एक मीन पे रहेगा, तो ऑब्वियसली फेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्रीज. लॉजिक लगा दो, हो जाता. फेजर डायग्राम से कर दो नहीं. नेक्स्ट वन. The periodic time of a particle doing the simple harmonic motion is 4 seconds. The time taken by to go from the mean position to half the maximum amplitude will be equal to how much? So y is equals to your a into sine 2 pi by capital T into your t. एक y की वैल्यू कितनी है? a by 2, that is equals to your a into sine 2 pi by capital T into t. ये और ये चले गया. So for what value of the sine? This will be 1 by 2 beta. This will be sine pi by 6 will be equal to sine. This will be 2 pi by capital T into t. Sine or sine gets cancelled. Pi or pi also gets cancelled. 1 by 6 is equals to 2t divided by capital T.
ठीक है ना। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, द पीरियोडिक टाइम ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम इज 4 सेकेंड्स, यानी कैपिटल टी 4 सेकेंड्स दे रखा है, यानी 2t डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, यानी t की वैल्यू हो जाएगी 1/3 सेकेंड्स। The displacement of a particle from its mean position is given by y is equals to 0.2 sine 10 pi t plus 1.5 pi cos 10 pi t plus 1.5 pi. The motion of the particle is what? See, for any particle to undergo an SHM, you need to be obey the principle of y is equals to a into sine omega t. अब ये देखो equation जो आया मेरे पास, y is equals to 0.2 into sine, this one is 10 into pi t, 10 into pi t plus 1.5 into your pi, और ये हो गया cos 10 pi t plus 1.5 pi. इसको सिंप्लीफाई कर लो, that is equals to कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, sin a cos b का फॉर्म में, यानी दिस विल बिकम फॉर मी 0. अपने पास ये फॉर्मूला याद है ना, साइन ऑफ योर 2a विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ योर साइन a इंटू योर कॉस a, यानी पूरा साइन a और कॉस b में लिखूं तो साइन 2a बाई 2 हो जाना, तो 2 करे तो 0.1 हो जाता, दिस विल बिकम फॉर मी साइन, दिस वन इज योर 2 इंटू योर 10 पाई t प्लस 1.5 पाई. Okay, and that will be equal to 0.1 into sine 20 pi t plus 3 pi. तो टाइम पीरियड कितना बन रहा है देखो इसका, yt is equals to 2 pi by your omega. So 2 pi omega की वैल्यू कितनी है 20 pi, pi और pi gets cancelled, that will be equal to 1/10 यानी 0.1 second. So time period will be simple harmonic motion, the time period of 0.1 seconds. See. The kinetic energy and the potential energy of a particle exceeding the SHM are equal. The ratio of its displacement and amplitude will be equal to how much? I hope everyone can do this one better. Try karo. Kinetic energy and the potential energy of the particle executing are same. And given in the problem is that kinetic energy is equals to potential energy. दोनों को इक्वेट कर दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है अपने को, isn't it? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ into m into your omega square a square minus x square is equals to half into m into your omega square into your x square. ठीक है ना, half m omega square will get cancelled, so a square minus x square is equals to x square. तो कितना बन जाएगा बेटा, a square is equals to 2 into x square, तो x square is equals to a square divided by 2. ओके, यानी x by your a is equals to your 1 by root 2. X by a will be equal to 1 by root. So ratio of the displacement divided by amplitude. A is your amplitude beta. Here 1 by root 2 आएगा, तो B will be the answer. Next one. Two simple pendulums of length 1.4 mm. ये मैंने already करवाया था, एक बार try करो आप लोग. Two simple pendulum of length 1.44 meter and 1 meter start swinging together. After how many vibrations will this again start swinging together? Frequency is inversely proportional to root of your L बोला था मैंने, है कि नहीं? तो N2 divided by N1 is equals to under root of L1 divided by L2, यानी 1.44 divided by 1, यानी ये बनेगा मेरे को 1.2 divided by 1, यानी N2 is equals to 1.2 times of N1. N2 is an integral minimum beta, so N1 should be 5 and N2 must be equal to 6. ठीक है ना, 5 और 6 में दे रखा है ना बेटा,
for n2 to be an integral multiple, यानी integral के minimum होना चाहिए. So minimum value of your n1 should be equal to how much for me? 5. And n2 must be equal to your 6. तो क्या हो सकता है आंसर बेटा? 6 oscillations of the smaller one. ऐसा लिख सकता हूँ. समझ में आया? So देखो n2 is equals to, this will become 12 by 10 into your n1. Isn't it? That is the 10 times of n2 is equals to 12 times of n1. 2 6s are 2 5s are. And 5 times of n2 will be equal to 6 times of n1. Done? 17th one देखो. The equations y1 is equals to a into sin omega t and y2 is equals to a by 2 sin omega t plus a by 2 cos omega t represents Shm. The ratio of the amplitudes of the two motions is equals to how much? Simplify करो खाली. सेवनटीन्थ वन का आंसर क्या आएगा बेटा? y2 को सिंप्लीफाई कर लो मैं पहले. y2 is equals to a by 2 कॉमन हो जाएगा. This will be sin omega t plus cos omega t. तो ये हो जाएगा मेरे पास a by 2. This one is root 2 into sin of your omega t plus 45. यानी this will become for me a by root 2 into sin omega t plus 45. दोनों का एम्पलीट्यूड देख लो कितना आ रहा है. a1 डिवाइडेड बाई a2. a1 के लिए तो ये है और a2 के लिए a by root 2 है. तो ये चलेगा. Isn't it? That is equals to root 2 आना चाहिए d. क्योंकि ये cos है ना बेटा, cos को हम लोग sin में कन्वर्ट कर रहे हैं. Isn't it? cos को हम लोग sin में कन्वर्ट कर रहे हैं और a by 2 है ना साथ में. 90 डिवाइडेड बाई 2 45 हो जाए. ठीक है. 15th one. A particle is doing in a simple harmonic motion of amplitude 4 centimeter, time period 12 seconds. Ratio between time taken by it in going from the mean position to 2 centimeter and from 2 centimeter to the extreme position is how much? Particle is doing in SHM with an amplitude 4 centimeter. Time period दे रखा है 12 seconds. यानी omega is equals to 2 pi by capital T. That is the 2 pi capital T दे रखा है 12. That is pi by 6 omega की value. Okay, the ratio between the time taken by it in going from the mean position y is equals to 2 centimeters. For y is equals to 2 centimeters if I'm writing. So 2 is equals to amplitude is 4 into sine. Omega की value हो गई pi by 6 into your t1. Okay, इसको simplify कर लो, we'll get the value of t1. The same way for y is equals to from 2 centimeter to the extreme position. यानी mean से पूरा कितना हो जाएगा? 2 plus 2 that will be equal to 4. So 4 is equals to your 4 into your sine. Omega की value हो जाएगी pi by 6 into t2. a4 और a4 चले जाएगा. So sine pi by 6 into your t2. इसमें से t1 की वैल्यू निकालो और इसमें से t2 की वैल्यू निकालो. तो t1 की वैल्यू कितनी आ रही है देखो बेटा, 1 सेकेंड आ जाएगा और t2 की वैल्यू आ जाएगी 3 seconds. So time taken to go from the 2 centimeter of extreme position will be equal to how much? यानी t2 minus t1 कर दो. It is 3 minus 1. So that will be equal to 2 seconds.
So required ratio will be equal to how much? 1 by 2. Good question. Yeah, tomorrow is starting with waves will. Okay. Sure. 19 one देखो बेटा. On a planet, a freely falling body takes 2 seconds when it is dropped from a height of 8 meter. The time period of the simple pendulum of length 1 meter on that planet will be equal to how much? So G on any planet will be equal to how much, beta? When it is falling from a certain height, H will be equal to half into G into T square. यानी 2H will be equal to G into T square. So G की वैल्यू हो जाएगी 2H divided by T square. यानी 2 into कितने हाइट से 8 मीटर्स. टाइम कितना है 2 सेकेंड्स यानी 2 स्क्वायर 4. 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा. ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका एक्सेलरेशन आ गया. टाइम पीरियड का फॉर्मूला T is equals to 2 pi under root of your L by G. यानी ये हो गया 2 pi under root of L is 1, G value is 4. So that will become for me 2 pi divided by 2. 2 gets cancelled pi. में pi की वैल्यू हो गई 3.14 seconds. A will be the answer. Next one. If a simple pendulum is taken to a place where G decreases by 2% and lesser than 10% है तो direct shortcut formula apply कर सकते हो बेटा आप लोग. Delta T by T into your 100 is equals to minus of your half into your delta G by G into your 100. So minus sign indicates only the decreases. So minus of 1 by 2 into ये हो जाएगा minus of 2% decrease y into your 1%. यानी percent में दे रखा है ना 2 and 2 gets cancelled, minus minus will get cancelled, that will be equal to 1%. So it increases by 1%. देखो बेटा. The bob of a simple pendulum is displaced from its equilibrium position O to the position Q, which is at a height of H above the O, and the bob is released. Assuming the mass of the bob is to be m and time period of oscillation is 2 seconds, the tension in the string when the bob passes through the O will be equal to how much? Velocity क्या हो जाएगा बेटा इसके अंदर? So tension in the string when the bob passes through the lowest position. जब यहाँ पर रहेगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा mg और इसका टेंशन हो जाएगा t. ठीक है ना. So t will be equal to your mg plus of your m into v square divided by r आएगा. है ना. That will be equal to your mg plus m into v is equals to r square omega square divided by r. ये r के सम में चले जाएगा. So this is your mg plus m into your r into your omega square के बराबर. वेलोसिटी लिख सकता हूं बेटा. एट अ सर्टेन हाइट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v is equals to under root of 2gh. ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा is equals to 2 pi by capital T. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड्स दे रखा है. सो इट इज 2 pi डिवाइडेड बाय 2. ये चले जाएगा, ये आ जाएगा पाई. ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई. मैं इसको और ऐसा करके लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? देखो ओमेगा में ही लिख लो इसको. दैट इज इक्वल्स टू mg प्लस m into v divided by v by r. That is equals to mg plus m into v. V by r is nothing but omega. So that is equals to your mg plus m into v is equals to under root of 2g into h. ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई. ये हो गया टाइम पीरियड. सो इसमें से मैं m को कॉमन ले लूं into g plus pi under root of 2g into your h. This will be the answer.
g plus pi, यानी a will be the answer. हाँ वही लगाना है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए तो अपने को mv स्क्वायर बाय आ रहा है लोएस्ट पोजीशन पे. ये वाला देखो बेटा, the metallic bob of a simple pendulum has a relative density rho. Time period of the pendulum is t. If the metallic bob is immersed in water, then new time period will be equal to how much? ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. t dash divided by t will be equal to under root of g divided by g dash. So t dash will be equal to t into under root of rho divided by rho minus 1. Direct question. ग्राफ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा जल्दी से फिर. In case of a simple pendulum, time period versus length is differentiated by, okay, time period का relation क्या है बेटा? t is directly proportional to root l, यानी t square is directly proportional to your l, यानी parabola हो जाएगा. t square is directly proportional to your l, parabola in the downward direction. Next one, graph between velocity and the displacement of the particle executing in SHM. देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? y is equals to your a into sin omega into t, और वेलोसिटी का फॉर्मूला v is equals to a omega into cos of your omega t. तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो विल बी गेटिंग y square divided by a square is equals to v square divided by a square omega square, किसके बराबर हो जाएगी? 1. यानी दिस वन इज योर इक्वेशन ऑफ एलिप्स. This is your equation of ellipse, so it will be an ellipse. Next one, the variation of acceleration a of a particle executing SHM with the displacement y will be equal to how much? A is equals to minus of omega square into x, and y is equals to minus of m into x से कर करोगे तो will be getting a straight line with negative slope, so C will be the answer. 33. Acceleration a and time period t of a body in SHM is given by the curve as shown. Okay. Then corresponding graph between kinetic energy and the time t is corresponding to your how much? So in SHM when acceleration is negative beta, maximum or positive value, the velocity will become 0. So kinetic energy is also becoming for me 0. Okay? When acceleration is negative maxima और पॉजिटिव मैक्सिमा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और पॉजिटिव मैक्सिमा, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी 0 होना चाहिए, यानी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0. तो 0 एक्सेलरेशन के लिए, फॉर 0 एक्सेलरेशन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, यानी काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो विल बिकम मैक्सिमम. ठीक है ना? So first graph only the thing which is representing for me there. 34. The variation of the potential energy of an harmonic oscillator is as shown in figure. The spring constant. ये देखो ये आंसर आता है कि constant है 0.1 और y axis पे 0.4, x axis पे 20 mm. Is asking the potential energy. तो potential energy कितना दे रखा है बेटा? Total potential energy is 0.04 joules. रेस्टिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना है? U नॉट वैल्यू दे रखा है 0.01 joules, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी इसकी? 0.04 minus 0.01, that will be 0.03 joules, यानी that will be equal to half into m into omega square a square will be equal to your half into k into your a square, and इसकी एनर्जी वैल्यू कितनी हो गई? 0.03, that is equals to half into k. So A is given for me as 20 mm, so it is 20 divided by 1000 का whole square. तो उसमें से we can get the value of k. तो k की वैल्यू निकालो, you'll get the answer. यानी कि 2 into 0.03 मतलब 0.06 आ जाएगा, 2 divided by 100 यानी 2500 आ जाएगा. So that will be equal to 150 Newton per meter. D will be the answer. Next one. The body is performing an SHM. Its kinetic energy K varies with the time t. See, kinetic energy is varying with the time, but it is never negative.
तो इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें कांस्टेंट आ रहा है. सो ओनली ग्राफ व्हिच कैन डिसिप्लेट इज नथिंग बट फर्स्ट वन. चलो ओके, टाइम भी हो गया. टेक केयर, बाय.